हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉटनी ड्रैगन। तो मैं धर्मेश आपको वेलकम करता हूं आज के नए और एक वीडियो के साथ। बहुत दिनों के बाद हम वीडियो ला रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रिलेटेड कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस के बारे में। तो आगे ऐसा वीडियो बहुत सारे इस चैनल पर लाया जाएगा। तो जो लोग भी आपका दोस्त लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर सीरीज। तो क्वेश्चन पढ़ने के दौरान आप अगर खुद से आंसर करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर बता सकते हैं और उसके बाद जाके चेक कर सकते हैं। एंड लास्ट में आप कितने स्कोर कर रहे हैं टोटल क्वेश्चन से, या फिर कुछ क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। So question number one, which enzyme is responsible for unwinding of the DNA helix during replication? So the options are DNA ligase, DNA polymerase, helicase, topoisomerase. So your answer will be DNA helicase. So during the process of DNA replication, the double-stranded DNA helix is unwinded by the DNA helicase. This DNA helicase unwinds this double-stranded DNA and opens it into two single strands. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, in which direction does the DNA polymerase synthesize the new strand? So the options are 5 prime to 3 prime, 3 prime to 5 prime, both directions simultaneously, or random direction. So your answer will be 5 prime to 3 prime. So जो जब आपका पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो ऐसे, तो जब नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा वो आपका ऑलवेज इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यू नो both the strands are antiparallel to each other and also complementary. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्राइमेज ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन? So the options are synthesizes Okazaki fragments, adds RNA primers, joins DNA fragments, or repair mismatches. So your answer will be adds RNA primer. So during replication process, the DNA polymerase requires some RNA sequence for the synthesis of DNA strand. This initial oligonucleotide sequence is called as RNA primer, and these RNA primer are added by RNA primases. And DNA polymerase cannot synthesize from de novo. It requires some OH group, 5' OH, so that it can add DNTPs to it and extend the DNA strand. So next question will be, the short fragment formed on the lagging strand are called as replication forks, Okazaki fragments, leading strands, or primers. So your answer will be Okazaki fragments. So replication के दौरान जब आपका डीएनए स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में है और आपका हेलिकेज इसको ओपन करता जा रहा है, तो एक डायरेक्शन से आपका कॉन्टिन्यूसली सिंथेसाइज हो सकता है फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एंड तो आपका ये स्ट्रैंड ऐसा होगा। पर जब हेलिकेज आपका ओपन करता जा रहा है, ये वाले स्ट्रैंड में आपका थोड़ा थोड़ा ही ओपन होता जा रहा है, तो ये जितना मूव करता जाएगा इस तरफ, तो आपका फिर से यहाँ से थोड़ा गैप हो जाएगा, तो यहाँ से फिर से और एक स्ट्रैंड आपका सिंथेसाइज होगा। तो इस केस में
this strand is called as your leading strand, and this is your lagging strand. In this lagging strand, the small fragments which are formed are called as the Okazaki fragments. So next question: which enzyme replaces RNA primers with DNA nucleotides? So options are DNA helicase, DNA polymerase 1, DNA ligase, topoisomerase. So your answer will be DNA polymerase 1. जैसे कि मैं आप लोगों को बताया कि डीएनए सिंथेसिस के दौरान पहले आपको एक आरएनए प्राइमर की ज़रूरत होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, and this RNA primer is removed by this DNA polymerase 1. It removes this RNA primers and adds DNTPs to form the complete DNA. Next question. In eukaryotes, transcription occurs in the cytoplasm, ribosome, nucleus, or endoplasmic reticulum. So your answer will be nucleus. In eukaryotic organism, there is a nucleus inside which the DNAs are present, and this process of transcription and replication always occurs inside this nucleus. So next question number 7: which molecule is produced during the transcription? Options are mRNA or tRNA, rRNA, or all of the above. So your answer will be all of the above. As we know, now there is a central dogma. So what does it signify? According to the central dogma, RNA are produced from the DNA by the process of transcription, and from the RNA proteins are formed, and this process is called as translation. Okay, and there are some cases in retroviruses where DNA can be formed from the RNA, and this is called as reverse transcription. So this is the central dogma, and the RNA molecules like your mRNA, rRNA, tRNA, snRNA, all these RNAs are formed from the DNA by the process of transcription, and there are also some post-transcriptional modification which we will discuss in some next videos. Also, there are in prokaryotes and eukaryotes there are different types of transcription, or there are different mechanism, and in prokaryote there is only one um, RNA polymerase which synthesize all these RNAs. So next question: the promoter region in DNA is recognized by options are ribosome, RNA polymerase, tRNA, DNA polymerase. So your answer is RNA polymerase. So in the mRNA, the promoter region will be recognized by the RNA polymer. In the DNA, the promoter region will be recognized by your RNA polymerase, and then it synthesizes the mRNA or rRNA or tRNA depending on the type of RNA polymerase or the DNA type. So next question will be your: which of the following modification occur to pre-mRNA before it leaves the nucleus? Addition of a 5' cap, addition of a poly A tail, removal of introns,
और ऑल ऑफ द एबव। सो मैंने जैसे कि ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि आफ्टर द सिंथेसिस ऑफ प्री आरएनए और प्री एमआरएनए दे अंडरगो सम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन एंड व्हाट आर दे। सो आपका यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। सो in the post transcriptional modification there is some 5 prime capping, and there is a 3 prime poly a tail addition. Also there is also some splicing mechanism. So in future video we will discuss about all these processes. So next question: translation occurs in the nucleus, mitochondria, cytoplasm, Golgi apparatus. So your answer will be cytoplasm. So after this post-transcriptional modification, this matured mRNA comes out of the nucleus, and in the cytoplasm, the process of translation carried out by which the proteins are formed from this mRNA. So question number 11. Which RNA molecule carries amino acid to the ribosome? mRNA, rRNA, tRNA or snRNA? So the answer will be tRNA. In tRNA, this T stands for the transfer RNA. Next question. The start codon for translation is AUG, UGA, UAA or UAG. So answer will be your AUG. This AUG acts as a start codon in case of translation, where it codes for formyl methionine. Next question. What type of bond is formed between two amino acids during translation? Hydrogen bond, peptide bond, ionic bond, glycosidic bond. So your answer is peptide bond. So during this translation, the peptide bonds are formed between the amino acid which forms a polypeptide chain, and these polypeptide chains undergo some secondary tertiary modification to form a functional proteins. So next question will be your during translation the ribosome moves along the mRNA in which direction? 3 prime to 5 prime, 5 prime to 3 prime, both direction or random movement. So your answer will be 5 prime to 3 prime. So it is also similar to this DNA replication. Here in this case also the RNA polymerase moves from 5 prime to 3 prime direction. So next question, which site on the ribosome holds the growing polypeptide chain? Options are A site, P site, E site, S site. So your answer will be the P site. So RNA polymerase has three different sites in its larger subunit, where there is one A site, there is one A site, P site and E site. So what are they? So this A site is your amino acyl site. Here the incoming amino acyl tRNA molecule binds and carrying the next amino acid to add it to the growing polypeptide chain. And the P side or this peptidyl side, the tRNA carrying the growing polypeptide chain is bound here, and in the E side or the exit side, the tRNA molecules without the amino acid binds, and after that it exits from the ribosome from this E side. सो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक वीडियो में। तो आज की वीडियो में आपको क्वेश्चन कैसा लगा, और कोई कुछ क्वेश्चन में आपको कुछ डाउट है, कुछ सजेशन है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं।
और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, एंड अपने दोस्त लोगों के साथ जो लोग भी कुछ एंट्रेंस की प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सब्सक्राइब द चैनल। तो हम आपके लिए बहुत सारे वीडियोज ऐसे लेके आ सकते हैं इन फ्यूचर डेज। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।